The smart dealers don't really operate in the society in general. They only operate anonymously on private apps, which you know, not even WhatsApp, Telegram or Snapchat or anything. एक वाइट थी और दो ये थे ब्लैक थी. तो I enter that lane and the minute I enter that lane वो तीनों गाड़ियों की लाइट वाइट ऑन हो गई और वो एकदम से पीछे लग गई थी. कसौल अगर कोई भी जा रहा है क्यों जा रहा है? It's to bloody get Malana cream, which is one of the most sought after charas in the world. But NCB is, NCB has limitless power. With Aryan Khan, Aryan Khan ऐसा नहीं था कि randomly पकड़ा गया. तो बोट पे गए हैं किलोमीटर अंदर यॉट पे जहाँ पे उन्होंने सर्च करा. तो किसी को पहले से पता था कि वहाँ पे ये मिलेगा. It's like आपके 2 GB ब्रेन में 32 GB की रैम जबरदस्ती लगा दी और अब आपका ब्रेन फायर पे है. मतलब पिछली 4 ऊबर ड्राइवर से मेरे 3 का डिवोर्स का केस चल रहा था. ऊबर ड्राइवर्स? ऊबर ड्राइवर्स? First of all, thank you so much Anshul for being on AP podcast. First of all, first things first impression, loved the studio, enjoying the vibe of the studio. I hope we have a great conversation ahead. And yep, thank you so much for being with us. Perfect, thank you so much. I really like the first compliment. I am curious to do this first. Let's start the podcast with this. The podcast adjourned. So, like when I was researching about you, there are multiple things that I could ask you. Like we can begin with multiple things. Then I was, सोच रहा था मैं कि यार क्या पूछे. But then I got to this thing. Actually, I was looking out of the window. Then I realized like, shit, we are in the hub, Delhi. We are in the hub of the illicit activities. So first things first, I want to ask you about this particular UT or capital only, the national capital, Delhi only, and the so-called, what we can say, shadow of illicit activities attached with it. How do you see it? How you have experienced it? And as a lawyer, how you have faced it? Illicit activities में तो मतलब सब कुछ ही आ जाएगा. But which form a part of an organized network system में आप drugs ले लो, which is something that I work with on a regular basis. Drugs में there are different classes of drugs. Some deal in only ganja, charas, whereas more organized systems deal in cocaine, meth, LSD and different other things. Then there is prostitution rings in Delhi, which are have increased manifold. मतलब पहले ढूंढने के लिए जाना पड़ता था और you had to be like 1 out of 10 of those 10 friends who knows कि कहाँ पे क्या होगा. But today you can just make a just dial query and ask कि massage चाहिए. And you can get a prostitute like at 5 in the morning. I didn't know like you can do these things on just dial. Yeah, you can within 5 minutes you will have. मतलब आज के टाइम पे आधा घंटे से Zomato को लग जाएगा, but prostitute will be delivered to you within 10-15 minutes max. Damn. Irrespective of wherever you are. Delhi में सबसे ज़्यादा prevalent है लाडो सराय में. There is this place near Saket. So a lot of people have basically set up shelter homes sort of accommodations for people. And एक घर में अच्छे lavish घरों में एक घर में 5 6 Russian and different nationalities they live. And the minute you put a query on Just Dial or anywhere, these people have websites only. You just like Delhi escort service, and you'll find like a slew of websites. The government knows about this. हाँ मतलब it's not something that is hidden. It's a Google search away. I'm sure the government, I don't know, won't Google search Delhi escorts, but even then, like, it's very much out there. And plus, like, कितने spa का scene सबको पता ही होता है कि irrespective of whichever locality, GK में बैठे हो तो GK में, लाजपत में बैठे हो तो लाजपत में, every block has a massage parlor which is offering sex. मतलब every block. I challenge you to find a block जहाँ पे नहीं होगा. And जैसे ये urban company पे भी आजकल हो गया कि you can get massage at home. So urban company is comparatively professional, but because the urban company का business model अलग है. However, Just Dial and other indexing services that you'll find online, इनका तो modus operandi ही यही है. Majority of their clients get to
no prostitutes through these places only. Because initially it's not, nobody has the balls ना कि आज जाके sex करूँगा. अच्छा धीरे धीरे they get their progression is पहले massage, then trip to Thailand की body to body करा लिया. फिर थोड़ा और गुदा आता है, like अब मैं sandwich massage कराऊँगा with 2 girls, and then it just gets on body to body massage हो गई. फिर on top of that like चलो आज कर ही लेते हैं, what does it matter, 2000 रुपये फालतू ही तो लगेंगे. So sex is one of those illicit things that happens. It's illegal, not immoral or anything per se. Then apart from other thing, normal crimes जो होता है, चोरी चकारी मर्डर वगैरह, but तो दिल्ली में बहुत नॉर्मल है. दिल्ली में कम है in comparison to other states, especially North Delhi, and North Delhi has a very high crime rate for violent crimes. साउथ दिल्ली इज़ कंपैरेटिवली वे मोर ईजी. मतलब हौस खास थाने और ये सब मैं जाता हूँ तो मैं यूजुअली लाइजनिंग में बात होती है पुलिस वालों से कि कुछ है तो बताना, या दे ऑल्सो रेफर केसेस एंड ऑल दोस थिंग्स होता रहता है. तो मर्डर में वही कहते हैं यार यहाँ पे तो होता ही नहीं है कुछ, यहाँ पे तो बस 420 की कंप्लेंट ही रहती है कि किसी ने किसी का पैसा खा लिया, किसी ने किसी का पैसा खा लिया, या चेक बाउंस हो गया. तो मर्डर वायलेंट क्राइम्स इज़ वेरी लेस. हैपनिंग डे फॉर देम इज़ कि चोरी हो गई गाड़ी में से, या चलते फिरते किसी ने चेन छीन ली, बट दैट इज द एक्सटेंट. एंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ड्रग्स इन दिल्ली? ड्रग्स इन दिल्ली, सो ड्रग्स इन दिल्ली आर अवेलेबल एवरीवेयर, एवरीबडी डज इट. आई डाउट कोई कॉलेज होगा जहाँ पे ड्रग्स नहीं होते होंगे. मतलब अगर आपके दोस्त नहीं हैं जो ड्रग्स नहीं करते हैं तो यू नीड टू मेक फ्रेंड्स, नॉट दैट योर कॉलेज और योर लोकेलिटी वोंट हैव ड्रग्स. And wide prevalent uses of charas ganja only, but that also a very menial sub-quality things that you get. It's very difficult to get a clean strain of any drug in Delhi. The market is insane. The people who deal with drugs aren't normal people. They are very smart people. Intellectually, they are far more stimulated. Their technological ability is just way too much in comparison to any law enforcement or normal people in general. मतलब वो कैसी कैसी बातें कर देंगे कि वहाँ से सर्वर लगाएंगे, यहाँ से सप्लाई चेन बिठाएंगे, and the kind of laws that they have to skirt in order to just stay away from law enforcement is also very crafty. तो इन ऑर्डर टू बिकम अ डीलर, नॉट योर एवरेज जो डीलर की जो 11वीं 12वीं में दिल्ली में बन जाते हैं कि वो लड़का तो डील करता है घटिया किसी का चेला बन के, बट पीपल हु रन प्रॉपर cartels where they import things from Netherlands, where they import things from US, from Canada, and then they have their distributors, sub-distributors, and that's how the chain is. So what happens is that एक बड़ा डीलर होता है जो बहुत ही ज़्यादा recluse टाइप का रहता है, ज़्यादा बात नहीं करेगा किसी से. You can't really get a hold of these people. So they basically import all of these things, and they have their people in the customs who will clear their things. या पोर्ट से आ रहा होगा तो वहाँ पे they'll have somebody over there जो इनको यहाँ पे एक bulk quantity पहुँचा देगा. From there it is shared between a group of people. There is a substance based partnership among dealers. तो अगर कोई कोक का डीलर है तो फिर वो एक बार में मान लो 20 किलो कोकेन मंगवाता है, तो it gets divided between 4 किलो 5 किलो 4 किलो 5 किलो between the big dealers. And then the big dealers have their area wise demarcation कि यहाँ पे किसी बंदे के नीचे और भी लोग काम करते हैं तो they will disseminate it through there. And the smart dealers don't really operate in the society in general. They only operate anonymously on private apps which you know, not even WhatsApp, Telegram or Snapchat or anything. वो नकली वाला छोटा मोटा हिसाब किताब होता है. The big dealers have their private dark web based apps, and it's not like even if you search it anywhere you can find them. Somebody has to introduce you to that entire chain. Only then and based on the trust you be able to place your order in the first place. And payments are very much anonymized. They don't use Bitcoin also because Bitcoin can be traced through wallet to from. तो खाली कैश चलता है? Cash नहीं चलता है. They use cryptocurrency only, but they used cryptocurrencies which have 7 or 8
rounds of circulation before a wallet-to-wallet transaction happens. I know it sounds really technical, but they use things like Monero or something that is not commonly available also. तो it becomes very difficult कि अगर किसी को मान लो नारकोटिक्स ब्यूरो में कहीं पे पता लगाना है कि चेन कैसे बनती है, it becomes almost next to impossible. Almost क्या impossible ही है. Not once has it happened that I've come across a case जहाँ पे किसी ने टैप करा है फ़ोन या किसी ने मैसेज इंटरसेप्ट करा है या पैकेज एक्सरे में पकड़ा गया, भनक लग गई. इट्स ऑलवेज अ स्निच. हमेशा कोई ना कोई मुखबरी करेगा in order to either get out of their own legal troubles or for money or for a reward, and then a drug racket will get busted. Are very powerful people involved in this at, like, even if we consider this at a state level or capital level, so are very powerful people involved in this who might be having an influence in the government? Majority of the people who will be involved in this racket won't even know that they're involved, to be fairly honest. Like, it's not like अदानी के पोर्ट पे जैसे it's a common day it was very common news last year कि अदानी के पोर्ट पे ड्रग्स काफ़ी बार आए गए हैं. And in one of the cases ये भी हुआ था कि around 200 odd kgs of drugs, I think heroin, was lying over there and nobody was coming to claim it. So it's not like Adani knows that this is happening at his port or he is saying कि मेरे को फर्क पड़ता है, because he has a separate legitimate or whatever business he has. He doesn't really have to do anything with drugs. So he doesn't know. And similarly, the infrastructure used by, like I said, they're smart people. You don't get to know that you are a part of the chain unless you are, earning something out of it. तो Uber में अगर आप अब जैसे Dunzo है, how do you transport drugs in Delhi from one place to another? या दोस्त कहता है यार एक जॉइंट का माल भेज दे या 2 जॉइंट का माल भेज दे, तो तुम एक माचिस के डब्बे में भरोगे या सिगरेट के डब्बे में भरोगे और डंसो कर दोगे या वी फास्ट कर दोगे. तो वी फास्ट और डंसो और द डिलीवरी राइडर्स डोंट नो जैक अबाउट कि कहाँ से आ रहा है, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ द majority of the way small quantities are exchanged in Delhi. And that's how, like, large people might be involved, but they don't have any idea until unless they're earning something actively from it. Like, उनका रोजी रोटी का या उनका बहुत बड़ा पैसा वहाँ से आ रहा है. Is it possible कि police knows about it, but they don't interfere because some person is attached with it, a very powerful person? Not in high profile, good quality imported drugs usually. बट जो गंदा, मतलब ये 50-100 रुपए की पुड़िया बिकती है and all those things, they know. मतलब दिल्ली में निज़ामुद्दीन में माल मिलता है, किसको नहीं पता है. या सुभाष नगर इज फेमस फॉर 800 रुपए की कलियाँ, सबको पता है. like there is a जुग्गी जहाँ पे माल मिलेगा. तो it can't be done without the knowledge, and rather it can't be done without paying your beat officer कि आके परेशान मत करियो. तो नॉलेज तो है ही, बट क्या उसको वो कुछ कर सकते हैं? श्योर, एक इन्फोर्समेंट ला के दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे ड्रग्स हैव ऑलवेज बीन पॉपुलराइज्ड इन अ प्लेस जहाँ पे इकोनॉमिक misbalances बहुत हाई हो. You pick up a country like Afghanistan, or you pick up a country like Colombia, or you pick up Mexico. There's a lower section of society which is desperate to get success, and in order to match at par with the worldly standards of success, they will do things, and you can't stop it यार. मतलब और करना भी क्यों है? ड्रग्स करना बुरी बात होता था शायद according to morals, but now a lot of drugs have been legalized at a lot of places. So why shouldn't you, and why wouldn't you? So you support this ideology that drugs should be legalized? Yes. You support that? Absolutely. I mean, LSD and MDMA considered कि लोगों का जीवन खराब कर देते हैं. हाय, ये LSD में नशे में छत से कूद गया, ये 4-5 साल पुरानी बकवास आती थी. LSD has been decriminalized in Sydney and parts of US and Canada for people dealing with trauma. It's said that the way LSD or MDMA or shrooms can help you, no drug in the market can help you, no medicine in the market can help you. But in a volatile country like India, where the topography is so much volatile, one side you are having a very polished crowd, the other side you are having like people who belong to these juggies.
in a country like this, do you think it should be legalized still? हाँ यार, मतलब अगर लीगलाइज होगा तो इतने आराम से हर कोई फूक भी नहीं पाएगा या कर भी नहीं पाएगा. आज के टाइम पे भी जो गरीब जनता है वो ड्रग्स तो करती नहीं है, वो कूड़ा करती है. कूड़ा मतलब इट्स नॉट लाइक दे हैव एवर स्मोक प्योर चरस और प्योर गांजा और दे हैव हैड प्योर कोकेन. Pure cocaine तो in fact it's something that is a myth altogether now, considering कि everybody now cuts cocaine with caffeine, or they will crush a crocin into it, or they will add detergent to it. So first of all, the privilege to use drugs in the first place properly in a medically fit way, in a sound manner, only belongs to the privileged class. Those who have the problems, you can't deal with anxiety and depression if you aren't capable enough to recognize it. रिक्शे वाले को थोड़ी क्या कहते हैं MDMA LSD का डोज मिल के डिप्रेशन ट्रीट कर पाएगा. There will be some brat sitting in some part of Delhi who will be going to a therapist, paying 1500-2000 रुपए to a therapist, and then he'll do his Reddit searches and he's like, oh, I need to do this. It's the same thing with cannabis right now. I mean, there's a worldwide cry about now decriminalizing the use of cannabis for personal consumption, and a lot of countries have already done it. And India में भी 1985 से पहले तो purely legal ही था. In fact, India में 1985 से कुछ पहले था ही नहीं. Everything was legal in the first place. There was no regulation whatsoever. तो ये 20-25 साल अब मतलब अब 45 साल हो गए हैं, considering the fact that 1985 से अब तक इलीगल है. इन्फोर्समेंट भी पिछले कितने 10-15 साल में तो है, उससे पहले ड्रग बस्ट कहाँ होते थे. And what do you feel about the drugs law that have been made in India at the moment? They're pathetic, yeah. They're so bad. Not from the angle of somebody who advocates कि drugs change the way you think and can be used in a beneficial manner. But 1985 में पास हुए थे under the राजीव गांधी गवर्नमेंट. उस टाइम पे इंडिया में कोई ड्रग्स का ऐसा रूल नहीं था. 3 एक्ट्स थे, डेंजरस ड्रग्स एक्ट, ओपियम एक्ट एंड ओपियम एक्ट 2. एंड उसमें भी दे कुडंट रियली आइडेंटिफाई कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को क्रिमिनलाइज करना है और कौन से सब्सटेंसेस को लाइसेंस करके रेगुलेट करके टैक्स करके कर देना है. तो इट्स सेड इट्स अ थ्योरी. राजीव गांधी वाज अ टेक savvy guy and he wanted good relations with the US and that time. The US is the agenda of war on drugs at that point of time, which is again a separate debate altogether. Ki the war on drugs was rather to target the members of the black community because use of cannabis was more prevalent. काले लोग ज़्यादा माल फूकते थे, तो उनको टारगेट करने के लिए war on drugs लॉन्च करा गया था back in 1890s. And from there, a misconceived war on drugs ended up affecting the policy of India. 1961 में UN convention होता है. India opposed कि चरस और ये अपना cannabis को नहीं करना चाहिए, चरस गांजे को criminalize नहीं करेंगे. However, 25 साल के बाद they finally passed the law. 25 साल के बाद, I mean, that tells you that initial stand of the country was not in for it. Finally, in 1985 they had to succumb to the pressure. Pressure में आगे वो करा यार. And even after that, up till 2010, there was nothing. कुछ था ही नहीं law के बारे में. And then stupid punishments like 10 years and 20 years for something that is a drug. I mean, drugs करने कौन जाते हैं भाई? एक तो अच्छे drugs करने के लिए बहुत महंगा और अमीर आदमी जाएगा, in which majority of the times he'll get out. The number of times you hear something on the news, उससे बहुत ज़्यादा, मतलब more than 10 times. I don't have a figure because unreported cases you can't really take a statistic of. And NCRB data is trash. Goes unreported. How many of your friends or my friends have been caught by somebody smoking a dope? So many of them. So, Anshul, I really love the flow of the conversation over here, but I personally would like to ask you about this one particular thing when it comes to drugs, out of curiosity. How was your first encounter with this first drug trafficking, and who was your first client when it came to this, and how big it was? So my first set of clients basically आए थे मेरे पास, not by out of the blue, but I had to actually hunt down this group of people and befriend and understand like कहाँ पे है क्या है. So I made a friend in Gurgaon, and he used to run this company called Dope Test Kit, which is a drug testing company. It tells you whether your drugs are safe for consumption or it has something mixed in it. That guy passed away very recently. So
I became very good friends with him, and I told him that I have this thing of investing money with you on your company. So I would like to do that, but I would really like your help with my legal clients and everything. मैं NDPS venture out कर रहा हूँ, and now I need independent clients of my own. पहले तो सीनियर के साथ करते थे, तो पहले तो वो बहुत क्यूरियस था कि क्यों मिलूँ, कैसे मिलूँ, कब मिलूँ. But after a month उसने मेरे को बोला कि sure, you seem like a genuine guy and all that, आज हम मिल लेते हैं, etc. So he asked me to come to this place, Furball Story in Gurgaon. It's in Golf Course Road. So I go there and I had my car and everything. So वहाँ पे मैं जैसे ही enter करा तो there were 3 cars already in the lane. तो यही थोड़ी सी वो हुई कि were they big cars, वो रोला वाली cars थी क्या ये? They were Mercedes Benz or anything, but they were decent cars. एक Superb थी, एक उसके बाद Endeavour थी, और एक I think कोई Cruze या कुछ थी. All black? No, different. एक white थी और 2 कहते हैं black थी. तो I enter that lane, and the minute I enter that lane वो तीनों गाड़ियों की लाइट वाइट ऑन हो गई और वो एकदम से पीछे लग गई थी, मतलब ऐसे एकदम पार्किंग से बाहर आ गई. तो आई गॉट अ लिटिल कंसर्न कि हो क्या रहा है. दिस गाय कॉल्ड मी, इज लाइक दिस प्लेस डजंट लुक सेफ, आई वांट यू टू कम टू द मेन रोड. तो वहाँ मेरे को लेके गया. तो आई एम नाउ ऑलरेडी, मेरे को थोड़ा घबराहट हो रही है कि फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू मीट डीलर्स एंड एवरीथिंग, क्या है ये. तो गया मैं, तो आउटसाइड वन ऑफ द सोसाइटीज ऑन गोल्फ कोर्स रोड, गोल चक्कर के पास, उन्होंने मेरे को बोला कि गेट आउट ऑफ द कार एंड ब्रिंग योर ID एंड एवरीथिंग. So they check my IDs, they do Google searches of my name to just check कि मैं narcotic department का आदमी नहीं हूँ. I'm not trying to trace them down. And so once he got done with that, he asked me to just follow him. तो वहाँ से हम एक पार्क में गए. पार्क में उन्होंने मेरी गाड़ी लगवाई. Then the cars changed, 3 नई अलग गाड़ियाँ आ गई. तो they asked me to get inside one of them. From there, they took us to this shopping mall complex on the opposite side of the road. There, the cars again changed. From there, I went to DLF Phase 1 in their cars, obviously. And मतलब घर के main gate से लेके जो उनका घर का जो door, basically living room का door होता है. From the gate to the door, they had 3 set of checks. So one was a normal security check, a metal detector, and then was a thermal scan. And this was all happening inside a house. Then I enter, I saw the most luxurious scene I have seen in my life. 4 very smart, decent, one of those posh, polished, guys know where they're sitting, what they're doing. Proper, had their moisturizers on and everything, मतलब चमक रहे हैं. And then there are like these 5 girls over there, no clothes on, and like sorry. I just enter, देखता हूँ जो ये हो क्या रहा है. तो I'm also अंदर से थोड़ा घबराहट भी हो रही है और थोड़ा क्यूरियस भी हो रहा हूँ कि कहाँ है, क्या है, क्यों है. Then I sit down with them, I have a little chit chat. Nothing with regard to drugs or anything in general. कौन क्या, we just discuss अच्छा क्या चल रहा है. They offer me a drink, I have a drink. 3 weeks after that, I get a call at 3 in the night that बंदा पकड़ा के निकलवाते हो क्या. And naturally I was like sure. So that was the way the first client actually ended up happening for me. And because वो करवा दिया, पैसे खिला के अपना बंदे को निकलवा दिया, वो सब कर दिया. तो that's how full Breaking Bad वाली vibe आ रही है मुझे यहाँ से. It's like you were Heisenberg and you've been taken to places. हाँ मतलब it's obviously fucked up to even say this on camera कि पैसे खिलवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया. But यार होता है. मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी हो जो कहेगा नहीं ये क्या बात कर रहे हो, ये तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. इससे मिल रहा है ना हाउ मदर और फादर मेरा बेटा ड्रग्स नहीं कर सकता. तो जाके देख बहन जो कॉलेज में यार आधा कॉलेज जनरेटी है. कौन सा कॉलेज नहीं होगा यार. एंड इट्स नॉट लाइक लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं, सब करते हैं यार. और दैट्स हाउ थिंग्स ऑपरेट. और कहाँ से आ रहा है, somebody is supplying it. और
कुछ ड्रग्स तो मेजॉरिटी ड्रग्स ऐसे होते हैं इंडिया में बन ही नहीं सकते, लाइक LSD you can't get it in manufacture it in India because it's just so complicated to make LSD in the first place. It's such a sensitive process. You need to have a proper facility, a specific lab with proper apparatus. इंडिया में किसी के अंदर गूदा ही नहीं है वो बना दे, because it's दिमाग इतना लगेगा उस चीज़ में. Similarly, MDMA, you can't make it in India, so it's coming from somewhere. It's coming in huge quantities. So where is it happening? Clearly not at the retail stores, yeah, not by big corporations, but yeah, dealers कर रहे हैं और करना भी पड़ेगा भाई. कोई drug mafia exist करता है क्या? Like if you have ever heard their name or if you have ever witnessed their shadow sort of, or I would say persona. There isn't a mafia, but there are trusted dealers on the dark web. मतलब there Indian dark web पे there is one Mr. 72, one of the most trusted guys out there, and हाँ मतलब उससे अगर लोगे तो तुम्हें पता है that genuine मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा, but you can be rest reassured प्योर मिलेगा. तो there are trusted dealers. There isn't really mafia. मैं भी जब मतलब clients होते हैं तो I can't look at them as like oh criminals doing bad things. Majority of them are spiritually so awakened. You ask them कि इससे क्या होगा, they'll give you so many stories that Hari Om talk to me about this, talk to me about that. Meditate करना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, stress is a killer. Like they'll talk to you like that. Like it's not a mafia. It's just people who understand chemicals better. And what are these people like? मतलब इनका कैसा रहता है persona overall? जैसे your clients, especially if you see these clients, they are higher in the hierarchy. Introvert. Very introvert. They don't want to talk. They don't want to have pointless conversations or even meaningful conversations, form any emotional connection with you. They are in their own relaxed state of mind, and they truly believe that they are doing good in the world by selling drugs or by not selling drugs. And this guy I'm telling you about, the dope test kit guy, very smart guy, techie guy, Amazon से पहले Amazon में नौकरी किया, फिर Google में नौकरी किया, फिर Reddit में नौकरी किया. He was earning good. He had a package of 1.15 per month वो कमा रहा था before taxes. And from there the corporate things ate him up. Then he had a history of sexual abuse in his family. His father had sexually assaulted him. He comes from a very उसकी बहन बॉलीवुड में है. The girl in प्यार का पंचनामा, सोनाली सहगल, उसका भाई है, रियल ब्रदर था, estranged family situation and all that thing. That's what he told me. One of the brightest guys I know. Like you talk to him about drugs, he'll tell you about chemicals like that, कि क्या है क्या नहीं है. But yeah man, like because he just did not have the apparatus or the ecosystem to spiritually relax himself, meditate, take a trip. He was heavily into drugs, heavily into drugs. He passed away very recently. Do you feel like जो लोग इतना heavily drugs में involve होते हैं, they are having some like really bad, you could say family issues, personal issues? It definitely increases the likelihood कि आप करोगे. Like somebody who's having a very bright or cherished childhood is particularly not going to get into these things. Yes. I mean, till the time you're happy and you're you're not happy, you're content, you won't venture out and do other things. Like the reason that why we do anything in the first place is to satisfy ourselves. Why did you start this podcast? You obviously had a void to fill. Or why am I speaking shit on camera about such sensitive things that I know can get me fucked professionally? Like NCB already can't मारती है लोगों की, मेरी और मार लेगी. और मारती है भाई, मतलब once you get embroiled in a drugs case, forget anything, मतलब you will run for your life. And nothing on earth is going to save you once the case is registered. Before the case is registered, sure, you can get out of shit by paying off huge sums of money, huge. मतलब ये नहीं है 10-15 हज़ार रुपये में निकल जाओगे. अगर FIR तक बात पहुंच गई है तो बड़ा अमाउंट ही लगेगा. Again, like NCRB का report है, facts. 3% of the Indian population consumes cannabis. 100 करोड़ की जनता में अगर 3% भी लगा रहे तो भैया बहुत बड़ा फिगर है यार. बहुत बड़ा.
I mean, there's specific destinations for consuming things. Kasol, Kodaikanal, Shillong. Why do people go over there? You think it's to bloody enjoy the scenery? No. Kasol, अगर कोई भी जा रहा है, क्यों जा रहा है? It's to bloody get Malana cream, which is one of the most sought after charas in the world. So when you have things like that, which are part of the basic common knowledge, why do we assume that A, it doesn't happen or it happens only in shaded areas where we don't get to know what is happening? B, that the lack of information about how these things impact you is also something which makes us fearful. Well, let's say for example, till the time we did not know anything about drugs, we used to think कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है, नशेड़ी है. नशेड़ी इन बचपन used to be बहुत hard. अब नशेड़ी है तो दोस्त है, कोई नहीं है, मेरे है इसको पिला, है यही होता है ना. तो the fear gets overcome by knowledge, and history has now told us कि भैया ड्रग से इतना बुरा नुकसान नहीं होता है, provided आप तमीज़ से करो. More people die of consuming things which are not even drugs. चीनी से ज़्यादा लोग मरते हैं, फ्राइड खाना खाने से ज़्यादा मरते हैं. पर तू खाता साला कोकेन को इलीगल बोल देता है. मिलती नहीं है इतने आराम से, मिलती है तो जो कर रहा होता है वो वैसे ही टेंशन में होता है कि 10,000 रुपये ग्राम है यार. 10,000 रुपये ग्राम कोकेन मतलब एक आदमी को करना मतलब 2 दिन भी चलेगी मैक्सिमम, तो 5,000 रुपये दिन का खर्चा है. मतलब सिर्फ कोकेन करना कि लीविंग एवरीथिंग असाइड इज 1.5 लाख रुपए पर महीना. क्या चरस करना, अच्छी चरस आज के टाइम पे व्हाट इज द रेट इन दिल्ली? आई डोंट नो, 15,000 17,000. 15,000 17,000 for how much quantity? For 1 tea. For 1 tea. And how much that is? 1 tola. That is 10 grams. Just 10 grams. Yeah. I don't know the specifics of it, but how many people can do? 10 grams will approximately give you somewhere around 30 grams. 30 yards will last you a month. And that costs you 15,000. Good, pure stuff. First rub, which has the THC oil, which affects the receptors properly. Otherwise, sure, iodex mix करके या boot polish mix करके तुम सस्ता बना सकते हो, which is happening. I don't know in most of the cases, not even majority, most of the cases. And even I guess, do you feel that at the borders when these stuff is coming from across the country, जैसे if you take the example of Kashmir, like people say the mall that is present there, it's extremely pure, इतना pure कि Bollywood के कुछ लोग उधर जाते हैं ये सब करने के लिए, just for that. And the mall is coming there from Afghanistan. There are theories like अफगान से अफगान आता है, अफगान से अफगान का हैश आता है जो थोड़ा सा ड्राई होता है. Then there is Moroccan mall, which is also very famous, I think in Kashmir only. So earlier there was a golden quadrilateral. Afghanistan was there, then on this part Myanmar was there, and down south Sri Lanka में भी कहा जाता था that drugs were there. तो इंडिया बीच में रह के यहाँ से हो जाता है. बट नाउ इट्स नो मोर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेड रूट्स एंड स्पाइस रूट्स. मतलब बट मैं लाइक व्हाट आई हर्ड ना कि जैसे BSF है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BSF टू सिक्योर दिस, बट these are the people who are basically letting these dealers go cross the roads. Because somebody at the very powerful position, जैसे किसी ने मुझे बोला था कि पता नहीं है इसको पकड़ रहे हैं, पता चला अगले दिन सीधा होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है कि यू आर फायर्ड, योर जॉब इज डन. हाँ यार, मतलब बिना पता लगाए थोड़ा निकल. अब see it's again we put so much imagination into drug ना. मतलब सुरंग होगी, सुरंग के अंदर से बंदा जाता होगा, दूसरी तरफ निकलता होगा और उसके पास बहुत सारा माल है. एक बार में 1-2 किलो तो जाता नहीं है, 100 किलो 150 किलो जाता है. लोगों को बड़े बड़े बस्ते या बड़े बड़े चीज़ों में कंसील करके लेके जाना पड़ता है और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं. वरना तो एयरपोर्ट से ही अपना एक बार में 3-4 किलो निकल जाता है. एयरपोर्ट से? हाँ, विद सो मच ऑफ हेवी सिक्योरिटी. इफ़ यू आर सक्सेसफुली एबल टू कंसील इट. जूते के सोल में अगर आपने छेद करके निकाल लिया या आपने अपनी जो आपकी अटैची की वॉल्स के बीच में डालना शुरू कर दिया, कॉमन डे, और यू आर पुटिंग इट समवेयर इन योर बॉडी वाले लेकिन अब डिटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्कैनर्स हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एट एयरपोर्ट्स. So now there are more crafty ways, and like I said, like
dealers and people who are doing this are, 2 steps or 3 steps ahead of us, at least in terms of how to get it inside the country. Is the police also ahead of us, like dealers specifically? Police is not ahead of. And even NCB? Not NCB. NCB is, NCB has limitless power. And like I was telling you कि हमेशा एक मुखबरी के थ्रू ही केस पकड़ा जाएगा. तो लेट्स से क्या होता है कि D&D पे एक बंदा पकड़ा गया जिसके पास 2 जॉइंट थे. Now that is of no value to the police guy except for maybe 5,000, 10,000 or maybe 15,000 rupees. Right? उससे ज़्यादा तो इतनी खुशी नहीं लगेगी 1-2 जॉइंट के माल के लिए. But if let's say somebody from NCB catches a hold of it, they'll harass you कि कहाँ से लिया, क्यों लिया. And in case it's not, dark web based, जहाँ पे traceability है ही नहीं, they will hunt down the dealer जिससे तुमने लिया, छोटा dealer जो भी होगा. And then again, like, they'll incentivize their investigation by going for the bigger fish. By pressurizing people कि तुम बता दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम बता दो तो तुम्हें छोड़ देंगे. And that is how, like, NCB will come hold of it. वो मारेंगे, कूटेंगे, धमकी देंगे, सब कर देंगे. The thing with NCB is that it works in such ways that they have limitless power. They can arrest you, they can put you behind bars, they can question you for long hours, and it goes unchecked. Their warrants come in like this. Like, so they are not ahead of the dealers दिमाग से, but their means and their unchecked powers give them that kind of sense कि वो कुछ भी कर सकते हैं. So that's how majority of the. And how is the influence of Bollywood and drugs? Bollywood बढ़िया है. Bollywood करता है प्योर अच्छे नशे. I had this client, he used to supply चरस to Sanjay Dutt. हाँ. He told me, I don't know कितना सच है कितना झूठ है इस बात में, but from his stature, from the the way you judge a client on how well connected and which car he drives and all those things, लग रहा था कि he has a solid network of distribution for his. तो संजय दत्त को चरस देता था. I could see that it's cleanest, it's expensive. And it's not something that you can just randomly order कि भाई आज दे दियो या कुछ दे दियो. पहले ऑर्डर प्लेस होता था, फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अवेलेबिलिटी की बेसिस पे सप्लाई होता था. तो बॉलीवुड में अच्छा खासा ड्रग यूज़ है, मतलब इट्स नॉट द केस नहीं है. पर वही बात है कि rarely will somebody try to fuck with you, like Aryan Khan case. They fucked with Aryan Khan. Aryan Khan ऐसा नहीं था कि randomly पकड़ा गया. वो बोट पे गए हैं किलोमीटर अंदर यॉट पे जहाँ पे उन्होंने सर्च करा. तो किसी को पहले से पता था कि वहाँ पे ये मिलेगा. It was already predetermined कि वहाँ पे कुछ हो रहा है. So it was more like an ambush for him. It was more like कि पहले से मुखबरी हो रखी थी कि वहाँ पे पाया जाएगा. It wasn't like randomly check कर, कोई गधा थोड़ी कि randomly अंदर चला जाएगा और यॉट पे randomly जाके चढ़ जाएगा. अच्छा ये बताओ चेकिंग क्या NCB या नार्कोटिक्स वाले के पास इतना टाइम थोड़ी है. True. तो any case or anything that you see is some dealer fucking over some dealer or somebody. Tomorrow you want to get me fucked, you know that इसके पास कुछ ऐसा दिखवाया था, और I want to get you fucked, मैं बोलूँगा कि तेरी जेब में 1 ग्राम कोकेन और NCB इंस्पेक्टर, and you will give money ना. ये तो 40 में तो 50,000 रुपये भी निकल जाएगा आराम से. And that is what? That is an inspector's 1 hour worth of time. 1 घंटे का 50,000 का अगर रेशो निकाल रहे हो तो मेरी जेब में 10,000 रुपये आ रहे, 40,000 रुपये भी is a profitable deal for any inspector. So basically NCB is that organization that you should never fuck up with. No agency is worth fucking with, yeah. No agency is worth fucking with, but at the same time, NDPS Act जो 1985 में पास हुआ है, it has very nicely written down provisions कि सर्च कैसे होगा, कौन करेगा. They are hardly followed. And in fact there is a very good clause, immunity clause, which says कि if you are a first time offender and आपके पास थोड़ा बहुत पकड़ा गया है तो आप कोर्ट को बोल सकते हो कि
I'm a first time offender, I'm sorry, I'm addicted to this drug, I want to leave it, I'll go into rehab, please excuse me from this trial. And the court को मैंडेटरी होता है कि तुम्हें सजा नहीं कर सकता अगर तुमने ये बोल दिया, बट barely follow. और रिहाब का क्या हाल है, मतलब दिस गाय, अ फ्रेंड ऑफ माइन, वसंत कुंज का बंदा था, ओल्ड गाय, 60-year-old guy. 60-year-old? 60-year-old guy, heavily dependent on meth. Heavily. Used to parade around like he's a cocaine dealer. And rehab gaya हुआ 5 बार. Did this guy watch Breaking Bad or something? जिद्दी बंदा बिल्कुल, मतलब, and सुकड़ा सा, nothing, divorced from his wife, fell in love again, बाहर कुछ हुआ. That guy was telling me about his escape from the rehab. वो कह रहा था कि वो तीसरी मंजिल से छलांग मार के एक बार rehab से निकला था. And जितने नशे में वो था उस टाइम पे, he couldn't have possibly lied about it. तो law इतना सुंदर है, और उसके बाद मतलब provisions सजा वाले बहुत खराब हैं, but otherwise the procedural laws in NDPS are good, but they barely followed. Then on top of that you have somebody sitting on top, like any eagle, NCB. जिस मिनट पता चला उस मिनट तो वाट लग गई. And then there is lack of education. That we get scared of what is LSD, what is shrooms. Shrooms के ऊपर तो इतना research हो रखा है. What is shrooms basically? Shrooms are basically mushrooms only. अच्छा. But there is these are mushrooms which have a chemical called psilocybin. So what will happen? Basically, drugs का concept क्या है? Drugs का concept is that it activates your brain in a certain way that your brain realizes that there are more neurons to fire up. Drugs have a certain level of classification. There are stimulants which elevate everything in your brain. Your focus, your attention. It increases the dopamine, serotonin in your body. So you need more things to spend your energy. Then there are relaxants. Relaxants basically put you in a respiratory relaxing phase. So you feel like going to sleep, you don't want to like do anything or talk to anyone. Then there are dissociatives. Dissociatives आप भूल जाते हो that आप क्या हो. You end up not reacting to things in that moment because you're so dissociated from yourself. There are psychedelics in which you start, thinking, or you start seeing or hearing things. You start experiencing a different neurological activity altogether. So especially around psychedelics, it's the case that आपके brain का एक बीच का part होता है, amygdala. Amygdala आपका decide करता है कि whether or whether not, as opposed to the frontal part of your brain, which is the prefrontal cortex, which decides on how to do things and doesn't judge for whether or whether not. तो जब आप LSD करते हो, this part of your brain lights up, like the neurons really get activated. And it forms connections. It is thinking about things at such a speed that your brain has never thought about before. It's like आपके 2 GB brain में 32 GB की RAM जबरदस्ती लगा दी और अब आपका brain fire पे है. मतलब you're continuously having shots, things coming up, and movements from past, present. Yeah. And that is why psychedelics are prescribed for people with trauma. किसी का दिल टूटा है, किसी की property में सब हड़प लिया गया है. The part of the brain is really not able to process things. वो process इतने time से हो रखा है कि दिमाग का ये वाला area dead होना शुरू हो गया. And this is not something that I'm making up. Spiritually मैं बकवास अभी कर रहा हूँ. All science fact. So when you do shrooms or when you do LSD or when you do other forms of psychedelics such as peyotes or Amanita muscarata, or you do go to Amazon for an ayahuasca DMT trip or something, it puts your brain in such an action phase that you end up processing everything about your life that you weren't able to process before. And that is why people who do drugs act a little differently, act a little more informed about themselves, as opposed to somebody who wouldn't have done that. I'm not saying doing drugs is the best cure possible for anybody who wants to be more informed, but only experimental people will go ahead and do it, na? Somebody who is saying कि I don't care, I need to feel the urge कि मुझे करना है. कोई पढ़ा लिखा
95% रेगुलरली लाने वाला लड़का जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, his entire life is around, you know, getting that job at Google and getting that 2 crore package. He won't be going to Amazon on a trip and like आज वो DMT करते हैं. There are bad things around drugs too, but those bad things are a direct result of that you don't know shit about it. So shit happens. You don't know कि कौन सा ड्रग करने के बाद क्या इफेक्ट होगा, and therefore you get scared and you do end up doing some shit. B, that in order to procure drugs you always go to a bad person, somebody who is, you know, considered a criminal. तो उसके बाद बंदूक भी होगी, उसके दोस्त यार भी काफ़ी shady होंगे, तो you get automatically, because it's criminal activity altogether, तो वहाँ पे गेटवे ड्रग की थ्योरी लगा के आपको एक बुरे दुनिया में एक्सपोजर मिलता है. And that is the entire stigma around drugs. So I guess we had enough talk about drugs. I was really thrilled and I was on the edge of my seat while listening to those Breaking Bad type of stories. So really enjoyed those. I really enjoyed the facts. It was new for me too. But I want to talk about marital rapes and especially marriage divorces concerning this Gen Z that we are having. Like now things like open marriages are existing where people are with each other but they are open, like they can be with other people. So I guess you must have encountered people like these or cases like these concerning divorces, or I would say marital rapes. What's your take on this? Divorces are very common now. मतलब पिछली 4 Uber ड्राइवर में से मेरे 3 का डिवोर्स का केस चल रहा था. Uber drivers? Uber drivers? Yeah. That's new. Out of my 4 rides, 3 का, और परेशान थे 3 अपने डिवोर्स से, because मेंटेनेंस का या कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था. Marital rapes happen, nobody can deny that यार. मतलब एक तो लोगों को बात करना नहीं आता है, आपस में अपने इश्यूज सुलझा के समेट लें, तो in order to establish dominance rape कर देते हैं. There is no diplomatic way to say this. Rape is not just a sexual crime, yaar. It's a psychological crime for sure. I mean, most of the people who rape end up saying that they were able to feel a certain pleasure which wasn't sexual. I mean, I've had sex with people and I've imagined myself in those scenarios that what if the other person was not even enjoying it, let alone consent. तब मतलब, you know, हम मर्दों का खड़ा नहीं होता है. Not from an emotional angle, it doesn't. And to think that, you know, you can do it with somebody, obviously, like, there is nothing sexual about it anymore. It has a lot to do with psychological interplay of things, about how you establish your dominance, about how you are, you know, conditioned by a certain objectification. It's better to, you know, like fuck a doll rather than fuck somebody against the consent. You agree? And unfortunately, people in marriages don't know jack shit about their stuff. Open marriages are the next go-to thing, and plus people have sort of, you know, started drawing a line very easily ki I don't want to sit down and, you know, have those conversations about what makes you uncomfortable, what makes me uncomfortable. If it doesn't suit me, sorry, I'm done, dusted, niklo. Relationships, I mean, happen, end up breaking like that. When was the last time you saw or you got to know through someone that 2 partners can sit, दो आपस में बैठ के, they can cry to each other? They can't. They just won't. Because we started drawing a line too early. It was like, stop, nahi karna. फिर जब, if the minute it gets fucked up from, like, you know, by the slightest margin, then there is no stopping the relationship. It's a fucking fucked up cycle. And as much as marital rape is true, the number of rape cases are also, you know, false on a very large basis. Was male ego a big part of these marital rapes? Considering, going by the fact, a very controversial opinion, but a lot of rape cases are false, including marital rape cases. And they are used as litigation strategy in order to get more maintenance, in order to harass the husband into giving property. We've done it, I've done it. Why wouldn't I?
एंड द होल थिंग इज इंडिया में डिवोर्स लेने के लिए देयर इज एब्सोल्युटली नो वे अंटिल अनलेस इज द म्यूचुअल कंसेंट. 4 साल तक तुम अगर डिवोर्स का वेट करोगे, बच्चा क्या कहते हैं 4 क्लासेस बड़ा हो जाएगा, तुम आप पैसा दे दे के परेशान हो जाओगे. वकील कम से कम कहीं से भी हालत में 1000 रुपये पेशी के हिसाब से गंदा मतलब गंदे से गंदे स्टैंडर्ड पे 1000 रुपये अगर तुम देते हो 2 महीने में एक पेशी है, तब भी तुम्हारा 6 कहते हैं साल का 6000, 4 साल का 24,000 सिर्फ पेशी का खर्चा है. डू यू हैव दैट काइंड ऑफ बैंडविड्थ? नो यार. ये अगर आपस में बैठ के बात कर, तू अपना पैसा ले, मैं अपना पैसा लेता हूँ, घर चल अपना, टाटा बाय बाय, बच्चे संभाल लूंगा यार मैं, संभाल लिया, तो इससे ज़्यादा सरदर्दी नहीं चली जा सकती. एंड रेप केस ऑन दिया, मैं लड़की होकर रेप केस ठोक दिया, तुम आओगे मेरे पास क्योंकि तुम्हें अपने आप को बचाना है, अपने पापा को बचाना है, अपनी मम्मी को बचाना है. 498 है वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसयूज्ड थिंग्स. यू कांट इवन डिनाई इट. दिल्ली तो बहुत प्रिविलेज वाली जगह है यार. यूपी चले जाओ, यूपी में साला अगर पति जाके पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है ना, तो पुलिस वाले मजाक बनाते हैं यार. मजाक बनाते हैं, क्यों आ गया भाई, क्या रखा है. नॉट इवन लाइक हार्डकोर यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश या कुछ, लाइक आउटस्कर्ट नोएडा, गाजियाबाद. नोएडा गाजियाबाद. अगर पति जाके कंप्लेंट करेगी, मेरी बीवी धमका रही है कि झूठा केस करेगी, पुलिस वाला कहेगा भाई साहब परेशान मत करो, जिस दिन लाइकी बीवी उस दिन आपको अंदर करेंगे, अभी परेशान मत करो. तो नेचुरली अब पति साला कहीं नहीं जा पा रहा है ना, थाने में सुनवाई है, और गलती से कंप्लेंट हो गई तो पूरे घर की ठुकेगी. मतलब सिर्फ पति अकेला अंदर नहीं जाएगा, माँ बाप साथ में जाएंगे 498 या क्रूरल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस में. पति साला परेशान होके जो त्याग करेगा. आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम सेइंग द बिल्ट इज सच दैट साइकोलॉजिकल fucked up nature becomes an inherent part of a relationship. And it won't stop till the time you have a very comfortable environment. What can I do? I can mint my money saying पति है तो चल भाई बचा लेते हैं, एंटिसिपेटरी बिल लगा देंगे, या बीवी के अगेंस्ट मैन्युफैक्चर कर देते हैं कॉन्वर्सेशंस कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको बचाने की. बीवी है तो बोलेंगे 5 केस गिनती के, एक डोमेस्टिक वायलेंस डाल देना, एक मेंटेनेंस डाल देना, एक क्रिमिनल क्या कहते हैं 125 में मेंटेनेंस डाल देना, एक क्या कहते हैं हम अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे फॉर दहेज का डिमांड करने के लिए, एक और ऐसा बना देंगे केस. 5 केस करेंगे, पति परेशान हो जाएगा कहीं ना कहीं खर्चा करने के लिए, और आगे सेटल कर लेगा. ये मेजरली जेनजी टाइप लोग कर रहे हैं या फिर पुराने वाले टाइप लोग भी हैं? Across the spectrum. You know, the day getting bored, go to a family court. Best entertainment if you don't have a stake in the marriage. You will see couple as 1 साल के अंदर तो वैसे भी डिवोर्स नहीं मिलता है. 1 साल मिनिमम शादी का रहना पड़ता है डिवोर्स करने के लिए. पर 1 साल के गैप वाले लोग भी मिलेंगे, और ऐसे लोग मिलेंगे जो 30 साल 35 साल साथ रह रहे हैं, एंड नॉट लाइक वंस इन अ व्हाइल, डेली. एंड फुल पावर लड़ाई, मतलब है कि देख पैंचो इसको, इसने घड़ी पहन रखी है 40,000 रुपये की, मेरे को खाने के लिए पैसा नहीं देता. फ्रॉम इशूज एज बिग एज कि ये मेरे घर क्या कहते हैं मेरे को जाने नहीं देता है, टू समथिंग एज स्मॉल एज कि मैं हल्दीराम का बर्गर खाना चाहती थी, इसने मुझे वेंडीज का खिला दिया. पीपल गो बैटशिट क्रेजी. एंड you know, like I said, like it's such a slippery slope. You do one thing wrong, गई आज नहीं गई, हफ्ते बाद गई, लेकिन गई 100% गई. Until unless आप रेप करवाने के लिए तैयार नहीं हो, until unless आप डर में रहने के लिए तैयार नहीं हो, you can forget the fact that marriage as an institution will survive now. I don't know if this term is right or not. There's this term called mediation in couples. What's that, if you can explain? Mediation is basically कि हाँ आपस में सेटल कर लो कि साथ रहना चाहते हो तो साथ रह लो, अलग रहना चाहते हो तो डिसाइड कर लो कि पैसा देना है तो कितना देना है, बट सेटल इट रादर देन गोइंग थ्रू द हैरोइंग प्रोसेस कि 6-7 महीने रहेंगे. बिल्कुल. तो दैट इज मीडिएशन, एंड एवरी पार्टी वांट्स टू, यू नो, कोर्ट कहता है हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत केसेस पड़े हैं, पुलिस कहती है यार हमें परेशान मत करो. तो मीडिएशन इज बेसिकली एन अल्टरनेट रेजोल्यूशन जो मिल जाता है कि अच्छा जाओ मीडिएशन सेंटर चले जाओ या काउंसलर के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारा सोल्यूशन करवा दे. इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि अगर
डिवोर्स का केस डालोगे तो काउंसलर के पास भेज देंगे कि कोशिश करेंगे इनको साथ रहने दो. In fact, I'll tell you about a very recent client case of mine only. I won't tell you the name obviously. Wife suffers from some mental disorders. एकदम से चिल्लाने लग जाती है, एकदम से शांत हो जाती है. Bipolar disorder? But it's not diagnosed, but it looks like it's bipolar. It's bipolarity, or it's something that is causing her to behave like this. Might be emotional dysregulation manifesting into something. और 6-7 महीने यही हुए हैं शादी को. 3-4 महीने पहले से उनकी सॉलिड लड़ाई चल रही है. मतलब रोज़ रात को चलते चलते, और मेरे को CCTV फुटेज भेजता है वो इन ऑर्डर टू फाइल अ केस एंड ऑल दोस थिंग. अभी 1 साल नहीं हुआ है तो ही इज जस्ट फाइलिंग फॉर सेपरेशन एंड ऑल दैट. तो CCTV फुटेज में देखता हूँ तो इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर मी ऑल टुगेदर. क्योंकि ऐसा होगा अभी 1 मिनट पहले दोनों चाय पी रहे होंगे और 1 मिनट के अंदर तो बीवी ऐसे चिल्ला रही होगी जैसे पता नहीं कपड़े फाड़ दिए हों कि भरी जनता है एंड ऑल दैट. दिस इज नाउ द पति वेंट टू द पुलिस स्टेशन ऑन माई एडवाइस कि जाके बस एक जमा करवा दे कि मेरे को डर है कि मेरे फैमिली के बुरी कंप्लेंट होगी. यूपी में पुलिस वालों ने हंस दिया, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. तो आई हैड टू इनफैक्ट सजेस्टिंग कि आप डाक से भेजो इंडियन पोस्ट से, सो दैट यू हैव अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड कि आपने तो अपने एंड से कंप्लायंस पूरी कर दी. देन ही आस्क्ड मी टू सेंड अ लीगल नोटिस. आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि लीगल नोटिस भेजेगा, उसके बाद डिस्टर्बेंस होगा, प्रॉब्लम होगी, और फिर तेरी बीवी इधर उधर भागेगी और तेरे को परेशान करेगी. लीगल नोटिस गया, बीवी ने वही किया. जाके वो थाने में खड़ी हो गई, ये पति मेरे को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. उसको बुला दिया, उसके पापा को बुला दिया, उसकी मम्मी को बुला दिया, भेज दिया मीडिएशन सेंटर में. अब मीडिएशन सेंटर वाले धमका रहे हैं कि तेरे को पता है तेरे पे ये कोर्स हो जाएगा तो हो जाएगा, तेरे पे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तुम कहीं नहीं रहोगे एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड लाइक सेटल कर लो, आपस में रह लो, खुश रहो. एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ कपल or for a family which is fighting for mediation or fighting for settlement of issues at a third party who gives a rat's ass about your marriage? Nothing. या तेरे रिलेशनशिप में वर्स्ट केस सिनेरियो कबीर सिंह का सिनेरियो होगा कि तेरा बेस्ट फ्रेंड आके तेरी बंदी को समझाने की कोशिश करेगा ना. चौथा बंदा आएगा, तेरे दिमाग में घंटा घुसने वाला है भाई. मेरे दिमाग में घंटा घुसने वाला है. जब नहीं घुस रहा तो ये बस पेपर बना रहे हैं भाई. आई नो आई साउंड वेरी क्रिटिकल ऑफ द सिस्टम एट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, बट भाई मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ यार, और मैं 4 बजे तक सिर्फ जनता के चुतियापे देखता हूँ और सुनता हूँ. इट्स नॉट लाइक समबडी इज डेस्परेट टू फक देयर लाइव्स अप एवरी मॉर्निंग विद एन इंटेंशन. दे लिटरली गो थ्रू सो मच. They go through so much because of the system, because of lack of empathy in police officer, because of their inability to sit down and talk issues with their mother, father, parents, partners. Consequently, they have to do drugs. So it's just like the whole cycle goes on and on. But drugs कर लिए तो फिर life becomes hard for them because now they have the processing power. Now they have the relaxed state of mind. आ जा भाई जो मर्जी करना है. तो marital rape, again, it's a thing, nobody can deny that. But on the contrary, there is a separate side altogether. That it's a standard practice in this country to file a rape case or a domestic violence case against your husband in order to get maintenance. Any lawyer, any judge or any bloody authority, if they can say anything on the contrary that this is not the case, I am more than happy to spend the rest of my legal career for free. And any bloody woke ideology which goes too much on the lines of feminism to say that this is not like this and we have an alternate expectation and this can be justified in some way or form. No, it cannot be. If you're looking at trauma and suffering, if you're looking at things, you have to look at from both the angles, from the males as well. No husband. The same way no woman wakes up with the intention of fucking up the husband's life because of a false case, no husband in their right mind would wake up to fuck the wife's life up by committing rape. It's always going to be some sort of circumstance, some sort of situation.
And deep down, when you talk to your clients who are involved in such particular practice of getting separated or divorced, deep down, what do you feel? Not, I would say, at the level of lawyer, but at the level of human. What are the issues, basically? यार अब तो ना फील होना बंद हो गया है. If I'm being very honest, because मैं पार्टनर्स के बीच में रेप केस को सेटल होते हुए भी दिख चुका हूँ कि शादी से पहले सेक्स किया था और शादी के दौरान पत्नी ने एफआईआर डाली और रेप का ट्रायल चला. दोनों ने अच्छे से लड़ाई झगड़ा कर लिया. 2 साल बाद सेटल करके आपस में साथ रह रहे हैं, बच्चा भी हो गया, खुशी खुशी रह रहे हैं. एंड दैट वाज अ प्रो बोनो क्लाइंट फॉर मी. फ्री में करा था मैंने. इमेजिन 3 साल के बाद मैं किसी के लिए फ्री में केस लड़ने के बाद देख रहा हूँ जो सेटल कर लिया है. तूने क्या करूँ मैं तेरे साथ? To the point of time यही उठा के मारने का मन किया होगा. मन नहीं कर यार, दिमाग खराब हो जाता है ये. बिकॉज यू नो एज अ लॉयर अपना काम है तेरा ट्रॉमा लेना. 80% ऑफ वकील का काम है इसकी देखो थेरेपी दूंगा मैं. इट्स नॉट अबाउट द लीगल. वही गिनती के 5 कागज हैं जो फाइल होने होते हैं, वही लीगल स्ट्रैटेजी के बड़े फॉर्मूला हैं जो लगने होते हैं. देयर इज नथिंग न्यू अबाउट द लॉ. या कोई नया एक्ट पास नहीं हो रहा है या कोई नया जजमेंट नहीं आ रहा है विच इज गोइंग टू रेडिकली चेंज द वे यू वांट टू प्रैक्टिस लॉ. 80% of the 80 or 9 fuck percentage, a good part of my life is spent on just reassuring my clients कि कोई नहीं, कुछ नहीं होगा सर, आप रिलैक्स करो, क्या सब ठीक हो जाएगा. Something that Baba Ram Rahim did in his Gaddi or Asaram did while telling his things that ऊपर वाला सब ठीक कर देगा and all those things. That is the role of an everyday lawyer sitting with clients. तो ऐसा सीन है. Why will I be able to feel even the remotest of emotions towards something that I'm doing as a part of my job? My job is to, as a guy, ensure that you don't go behind bars, you don't have to pay too much money to your wife to get a divorce, and that your parents and your family life is safe. As somebody who will be appearing from the wife, मेरा काम है कि तेरे को सबसे ज़्यादा पैसा दिलवाना है. ते पति क्या कहते हैं परेशान होता रहे और अल्टीमेटली गिवन कर दे टू सेटल द मैटर विद यू. वो करना है. एक सूटेबल लेवल ऑफ लाइफ अरेंज करके देनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आई माइट बी अर्निंग और नॉट अर्निंग. तो ऑब्जेक्टिवली इफ आई हैव टू लुक एट इट, सब्जेक्टिवली आई एम इमोशनलेस टुवर्ड्स इट. अब मेरे पास कोई आता है अगर डिवोर्स केस में आ जाओ यार कर देंगे, कोई नहीं. आई जस्ट लिटरली जस्ट गिव द नंबर ऑफ माई जूनियर कि इसको बता देना पूरा डिटेल मेरा क्या है, आप मेरे पास आ जाना, थेरेपी करा लेना और ये कागज बना देगी, फाइल कर लेगी, बहस भी कर लेगी. कोई इम्पोर्टेंट डेट होगी तो मैं चला जाऊंगा. बट उससे पहले तो क्या क्यों जाऊंगा यार, क्या कुछ नहीं है. बिल्कुल हार्टलेस वाला वाइब हो गया अब आपका इस चीज को लेके. हाँ मतलब द मिनट यू आर इन्वेस्टेड इमोशनली यू स्टार्ट फीलिंग स्टफ ना. मतलब अगर तुम बीवी की तरफ से और you see some guy and you have emotions, a friendly emotion towards a friend of yours who's a girl, and the boyfriend or the husband is torturing her, emotionally मारने का मन करेगा ना. मतलब अगर हमारी बेस्ट कोई लड़की दोस्त है बिल्कुल खास, उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है, कूटता है, रेप करता है, what is your standard response as somebody who's a friend? like नंबर दे बैंक चोट का standard daily response. Similarly for a girl, तुम्हें पता है एक वो है दोस्त है, उसकी बीवी है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उस पर फेक रेप करा हुआ है. योर हार्ट विल गो आउट टू द गाय ना कि तू बता भाई देखो क्या चाहिए, तेरे लिए सब करूँगा मैं, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा. एंड प्रोबेबली वंस और ट्वाइस यू विल गो टू द जेल टू विजिट हिम कि आ जाओ भाई क्या दिक्कत है. तो इमोशनली यू कांट इन्वेस्ट योरसेल्फ विद अ डिवोर्स क्लाइंट फॉर श्योर. इट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन. एंड इफ इट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन खत्म है कहानी. मतलब वही लगाओ फॉर्मूले खत्म करो. इट्स मैथ्स, इट्स नॉट आर्ट, इट्स मैथ्स. And now like moving towards the end of the discussion or conversation basically, like I really don't know how we should sum this up in the end, but again if you have noticed, like I was continuously mentioning Breaking Bad. So now why Breaking Bad is so popular, because again there is this appeal of a character which was in poverty, in disgrace, and suddenly एक rise हो गया एकदम से, एंटी हीरो बोलते हैं जैसे. So many people try to establish this particular fact in their own lives,
and I guess you are the best person to ask this about since you are a lawyer. What do you feel about this particular thing? So underdog bias. I think वो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि क्यों शाहरुख खान पसंद नहीं आएगा, मनोज बाजपेयी पसंद आएगा, because you'll say he's critically more acclaimed. Similarly, Breaking Bad, like somebody who was not there made it there, and I think like everybody has that in our own fucked up ways. We make our stories that I come from nothing, but look at me now. Exactly. It transpires from the most uneducated rungs of the society, जो कहते हैं ठोकर आके मेरा प्यार इंतकाम देखेगी. No. To the I am the one who knocks. वाला. Because you can't, become a powerful personality without having that weak background, fickle, very critical phase in life. हाँ तो शायद मतलब आप भी शायद इसलिए पॉडकास्ट कर रहे हो because you look at some sort of victimization in the past and you look at a superhuman ability to do things or just give you a spin on certain things. Go and meet powerful people. Yes, and similarly goes for me. The reason why I do a podcast or why I go to court or why I don't just generally go to Delhi High Court and do my litigation like a 6-year-old associate or join a corporate lawyer, but rather I'm hunting down NDPS dealers ki aa jao dosti to hamari yahan banegi, because we see a look at ourselves. Yeah, so power to the underdogs, but the thing is everybody is saying that. So do you support that ideology? I mean, I believe that it's probably one of the most powerful feelings in the world to succeed or become a hero. I call it the God complex. That if you've been through something very terrible and you're doing everything in your power to change that, including things that are immoral like drugs, including things that are non-conventional like going on yoga retreats, or including as something as simple as engaging in studies कि तुम एक subject matter expert बन गए हो और दुनिया को पागल कहने दो, पागल कहेगी तुम्हें because naturally you're not doing the conventional way. एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना है कि बच्चे की नौकरी लग जाए, 30, 50, 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये की सैलरी हो जाए, बट 70 हज़ार रुपये में मेरा भी कुछ नहीं होना है, तुम्हारा भी कुछ नहीं होना है, सबको पता है. Sure, it might give us the temporary relief that we feel right now. तो मजबूरी में आके हम मान ले कि हाँ इतनी सैलरी हमारे समीर को शांति दे देंगी. अगर मैं यही क्वेश्चन किसी से पूछूँ 10 साल बाद 70 हज़ार रुपये या लाख रुपये चलेगा, घंटा चलेगा भाई. तो आई सपोर्ट दिस आइडियोलॉजी दैट गो सो बॉन्कर्स, so out of the way, so radical, so crazy that everybody around you fails to ignore you. They have to acknowledge the fact that you are developing, you are evolving, you are changing at such a pace that you're doing so many things that it's hard to keep a track of. That you are in this God complex altogether, you're bettering, you're leveling up इतना ज़्यादा कि you can't recognize the person. मतलब कहते हैं 10 साल पहले हर आदमी अपने आप को देखता है कि क्या गधा आदमी था मैं, रोज़ ऐसा महसूस होता, कितना मज़ा आएगा. So I am fully in support of this underdog ideology, fully. And my actions, I think, I stand by with it through my actions also. Yeah. So let's see where things goes, but for now at the moment I guess that was all from my side that I wanted to ask. Cheers to that. So that's coffee. It is. So I honestly really enjoyed the flow of this conversation. I hope you did too. You had absolutely, yaar. I had a great time talking. I hope I didn't abuse a lot and say stuff a lot. No. I love the way the things were very unfiltered here and not with coochie stuff. So kudos to that, and again thank you so much for being with us. Cheers man. Cheers.